she told the chairman, she used two words for him, behuda और बेशरम। कमेटी के सदस्यों के ऊपर, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता। कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये कहीं कोई आपस में इनकी कोई मिली भगत है। महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहें वो दें और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहें वो मना कर दें, और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहें कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता। वो कमेटी के अंदर भी और कमेटी के बाहर भी जिन शब्दों का उपयोग किया है, संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। उनका उद्देश्य मूल रूप से था कि मूल प्रश्नों के जवाब से बच के और ये किसी तरह से जांच को बाधित किया जाए और इस विषय को बखेड़ा किया जाए, उसी को आधार लेके वो वॉकआउट कर गए। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, जेडीयू के सांसद थे और जो कांग्रेस के सांसद थे, सीपीएम के सांसद थे, सब लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था, एन केन प्रकेन इस जांच को बाधा डालना और इस जांच को ना हो। उन्होंने सर एक मुहावरा कहा है कि बस्त हरण हुआ है। देखिए, अब इस पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं पहले भी कहा हूँ कि उन्होंने कमेटी के अंदर जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक तो कमेटी की मर्यादा है, उस बात को नहीं बोला जा सकता, और दूसरा एक मानवीय संवेदना है भी कि ऐसी बात बाहर नहीं बोली जा सकती। जिन शब्दों का उपयोग किया है एक सांसद के नाते, एक महिला के नाते उनको शोभा नहीं देता। हमारे चेयरमैन जो विनोद सोनकर जी हैं, उन्होंने जब विटनेस के लिए हमारी माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी को बुलाया तो महुआ मोइत्रा जी ने जो है वो सबसे पहले कम से कम भी आप ये देखिए कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरी विस्तार के साथ जो है वो अपनी बात को रखा और उन्होंने अपनी जो भी उनकी पर्सनल लाइफ थी और जो भी ये मुद्दा था उसके बारे में पूरा विस्तार से उन्होंने जो है वो अपनी बात को रखा। और उसके बाद जब सवालात करने की बारी आई तो हमारे चेयरमैन साहब ने उनसे सवालात जो है वो करने शुरू किए और सवालात के साथ साथ उन्होंने उनको सबसे पहले ये बात कह दी थी, स्पष्ट कर दी थी कि हम आपसे जो भी सवाल करेंगे, आपकी इच्छा है आप उसका जवाब देना, आपकी इच्छा हो आप उसका जवाब नहीं देना, आप हाँ या ना में कह सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप अभी जवाब ना देना चाहें तो आप 24 घंटे का समय ले सकते हो, 24 घंटे के बाद आप उसका जवाब दे सकते हो। ये सब बातें होने के बावजूद जो है कि कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो जब चेयरमैन साहब ने उनसे पूछे तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल जो हैं आपत्तिजनक हैं। तो हमने भी ये महसूस किया कि अगर आपको ये लगता है, वैसे तो सवालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थे, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई आपत्तिजनक सवाल हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता था कि सवाल आपत्तिजनक हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास जब 3 ऑप्शंस थे तो उनको किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एक बहुत ही गुस्से के लहजे में जो है उन्होंने वहाँ पर जो है बर्ताव किया, वो मुझे लग रहा है कि सभी को थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था कि अगर आपके ऊपर एक सांसद होने के नाते जो है वो इतनी जो इस तरह के कोई आरोप अगर लग रहे हैं
तो उन आरोप को निराधार सिद्ध करना वो जिम्मेवारी बनती है उनकी। ऐसे उसमें उनको मुझे लगता है कि कमेटी के साथ पूरा कोऑपरेशन के साथ जो है, अगर वो अपनी बात को रखते, अगर वो ठीक तरीके से सभी बातों के जवाब देते, तो बहुत कुछ जो है वो मुझे लगता है कि शायद उनके पक्ष में जाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ और बहुत सी ऐसी शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया चेयरमैन साहब के लिए कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो है कुछ असंसदीय शब्द भी उन्होंने उसके में जो है इस्तेमाल किए। तो मुझे लगता है कि अगर उनके ऊपर जो आरोप थे, सभी कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब बड़े ध्यानपूर्वक उनकी सभी बातों को सुन रहे थे और सब जो हैं वो भी चाह रहे थे कि उनसे कुछ जो है वो सवालात अपनी तरफ से करने के लिए, लेकिन जो है वो चेयरमैन साहब के ही सवाल पूरे नहीं हुए थे कि वो बीच में ही जो है वो बायकाट करके और उन्होंने, बल्कि एक और है कि सभी जो सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, उनको भी कहा कि चलिए चलिए और उनको भी साथ लेकर और वो चली गई। तो बल्कि ये भी थोड़ा सा हैरानी करने वाली बात थी कि जो संसदीय कमेटी है उसके अंदर चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के जो भी सांसद हैं, विटनेस के तौर पर वो आकर अपनी बात रख के वो रखना चाहें ना रखना चाहें, बायकाट करना चाहें, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन वो उन जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी वो कहें कि आइए आइए चलिए चलिए करके, तो ऐसा लगता है कि कहीं शायद कोई उनकी पहले से ही कहीं कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं थी, कोई ऐसी कोई मिली भगत तो नहीं थी कि आपस में हम लोग इस तरह करके थोड़ा सा जो है शोर शराबा करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग बायकाट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो उनके पक्ष में नहीं गई है। तो ऐसे में मैडम उनकी क्या मंशा दिखती थी इस दौरान जो बातचीत के दौरान? नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को निराधार साबित करने के लिए आपको मौका मिला है, उस मौके का उनको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए था। उसको उनको बड़े शालीनता से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए था। अगर जवाब नहीं देना चाहती थी तो उनके पास ऑप्शन था कि वो कह देते कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती हूँ, और इसके साथ साथ अगर वो अभी तैयार नहीं थी तो कह सकती थी कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बाद में इसका रिप्लाई कर सकती हूँ। तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद जो है एकदम अपने टेम्पर को लूज़ कर देना और बहुत ज़्यादा जो है उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया और जो विपक्ष के सांसद हैं उनको कहा कि चलिए 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 करके, तो मुझे लगा कि ये कहीं जो दूसरे सांसदों ने भी ये महसूस किया कि ये कहीं कोई पहले से ही कोई प्लान तरीके से तो नहीं ये लोग इस तरह से आए थे कि हम लोग पहले जो है वो अपनी बातचीत रख के फिर ऐसे शोर शराबा करते हुए बायकॉट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये कहीं कोई आपस में इनकी कोई मिली भगत है। She went beyond all limits of decency. In fact, this was the second date when we all had sat together yesterday. And at that point of time, we had invited Mahua Moitra and she was supposed to answer our questions. Chairman asked a few questions and the chairman limited his questions to the affidavit submitted by Darshan Hiranandani. So there was no question of going beyond the limits or rather the contents of the affidavit. Mahua Moitra ji spoke for more than 1 hour and she talked about her personal life, in which I don't think anybody was interested, but she kept on talking about her personal life and we heard her with a lot of patience, I must admit. And then suddenly thereafter there were certain questions pertaining to the contents of the affidavit posed by the chairman where she actually lost her cool and she used all kinds of filthy language against the chairman and other members of the committee, and she appeared to be extremely aggressive. She was very arrogant in her demeanor, she was very rude, and I think she forgot that as a parliamentarian she had to be very decent in her demeanor, in her behavior. So I think this is very surprising that since yesterday till today she has been trying to play a victim card for herself. She is trying to seek sympathy of all and she is creating a fake narrative. She has been trying very hard to do so, and in fact she has been soliciting the help of all the opposition party members who were there part of the committee, Shri Girdhari Yadav ji and Danish Ali ji in particular. In fact, these two honorable members of parliament belonging to opposition parties banged the table
and they were extremely indecent in their behavior. And this lady kept on saying that Draupadi ka cheer haran ho raha hai. And we were aghast. We never thought this kind of behavior was befitting a parliamentarian. I mean, you know, as a parliamentarian, we have to behave in a certain manner. There are certain standards of conduct to which we have to conform. And she kept on shouting, hurling abuses at all of us. She refused to answer the questions. Honorable Chairman of the committee kept on saying if she did not want to answer the questions, she could take 24 hours to give in writing. She refused to do so. And she also said that the questions of the chairman were toxic by nature. So the very quality of the questions of the chairman was questioned by her. This was very surprising. She had come to answer our questions. And very sad it is, but true, that while she was walking away from the room, she stamped her foot and she looked at the chairman and said, I should not be using these words, these unparliamentary words, but I must say this because she has been trying to create a fake narrative and misleading the people of the country by playing a victim card. She told the chairman, she used two words for him, behuda or besharam. I think I should not be using these two words, but I am constrained to use, keeping in view the fact that she has been trying to build a fake narrative. Mahua Moitra ji was given a chance to speak for long hours, for about 2 hours, from 11 in the morning to almost 1:40, 1:45. She spoke uninterrupted. She was not given any leading questions by the chairman or any other member of the house, and we are, pleased to hear her and all. And in fact, we did not want to listen to her personal stories. So what happened ultimately is that she spoke at length, uninterrupted, and we listened to her. But despite that and all, she makes an allegation that she was not heard and all. Number two fact is that when we broke for lunch and all, and post-lunch session when we sat, she was asked a few questions. Obviously, the question session started and all, and chairman started the session. After answering 2-3 questions, she started creating a ruckus. And she threw a fit and all. She said that you have no right to ask this question because these are personal in nature. But to my mind, these are questions regarding the allegation brought in against her by Hiranandani ji and Mr. Jayanant. So they said all this. Obviously, she has to answer and all. You cannot say, being an MP, being in public life, you cannot say that these allegations are personal in nature, so I will not answer and all. You cannot, take the cover of an MP and then say that, no, I am protected by law, I am protected by parliament not to answer. Nobody is protected in this country and all. If you have allegation against you, you have to answer. Okay. She also alleged that the proceeding like a Vastraharan, like a Mahabharata in Mahabharata. No, absolutely not at all. In Mahabharata, we have seen that Draupadi was not given a chance. Her voice was not heard. And in this case, Mahua Moitra ji was given almost 2.5 hours of, uninterrupted time to plead her side of the story, and she did it and all. Everyone gave her time. We were not interested in her personal life. She went on and on and on about all, explaining what were this thing behind the photographs that were shown in the social media, or why were this allegation made by Advocate Jay Anant and all, and what were the background of the relation. We were not interested. This is not a family court, as I have said. We have said there also, this is not a family court. We are looking into the matter of ethics, which is to be, handled by the Ethics Committee. The Ethics Committee has a mandate to look into the unethical behavior of the parliamentarian, whether you have really taken gratification, whether you have taken gifts, whether you have been given this login ID to Mr. Hiranandani. Mr. Hiranandani is your authorized PA or not. These are like, look, I have a PA. He is an authorized PA. Parliament knows his number, and he is the one who logs in on my behalf. Once I have the OTP, he gives into the questions. So if Mr. Hiranandani is not her authorized PA, if Mr. Hiranandani does not belong to the class of assistant that MPs are entitled to, she should not be giving her login code to someone who's sitting as far as UAE and getting access to the members portal. Okay.
As an ethics committee member, how do you see the behavior, Mahua Moitra behavior and walkout? No, this is absolutely political. This is absolutely political, and I think that they had a pre-planned, agenda. Because Mr. Danish Ali, Mr. Girdhari Yadav, they were trying to dissuade the other members and the chairman from day one of the meeting. They tried to delay it, they dissuade it, and put a break into all these activities of the committee. And I thought even yesterday also they started doing it and all. And at certain point of time when things got out of control for them, they were not being able to answer. They fell into this trap and made up a political this thing. An ethics committee asking all sorts of filthy questions. Where are the tears and eyes? We're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it.